Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, which is Nikki Nogat, and this is me, Nikita Mehra, and today we're going to talk about the entrance exam of 2026. In that, we'll be covering all the important things, what is the syllabus going on, and what are the things you need to study for your written exam, which is CAT, also for CAT and also for situation test. So before we jump into the video, just for your information, I'm Nikita Mehra, and I'm doing BFTECH, Bachelor's of Fashion Technology from NIFT Mumbai, and I'm currently in my 4th year. So yes, let's begin with the video. So before that, just to give you a crisp information, what is NIFT? NIFT is the National Institute of Fashion Technology, and it caters some of the courses for design and for technology as well. So for design, it gives around 5 to 6 courses options. That is fashion designing, fashion communication, knitwear design, textile design, leather design, accessory design. And for the tech part, it gives Bachelor's of Fashion Technology, and also it provides post-graduation programs as well. For example, Masters in Design MDes, MF Tech, and also MFM Masters of Fashion Management. So yes, let's get into the video. So I have prepared a full slide, and also in the description I'll put the bullet points, because kuch bullet points बहुत ज़्यादा deep में है, like there are list of topics which you need to cover. So yes, we will be looking up to that, but you can go again and check in my description, and also put a link of the presentation as well on my description. So yes, here's my laptop, obviously to my rescue, because nowadays I can't do anything with presentations and proper slides. So yes, so we'll just begin with it. So I feel like आप लोगों ने NIFT entrance में apply कर दिया होगा. अगर नहीं किया है तो you still have time for like till 10th of January you can apply. So कर देना, because if you are willing to join any of the design entrances, because NIFT is the one for you guys, I feel. So yes, I'll put it here in the presentation mode, or what should I do? I should leave it, right? I should essay. So I've prepared a cute presentation for my subscribers, कि उनको भी समझ आए और मुझे भी समझ आ सके. So firstly, what is the NIFT components, exam के components? So basically दो parts में divide होता है for other courses as well. So पहले मैं BFTECH की बात करती हूँ, जिसमें मैं हूँ, तो हमें सिर्फ GAT देना होता है, which is General Ability Test. अब हम इसको साइड करते हैं. बट जो लोग हैं जो BDES के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन, उनको 3 तरह के टेस्ट देने होते हैं: GAT, CAT और सिचुएशन टेस्ट. GAT is General Ability Test, CAT is Creative Ability Test, and Situation Test, जिसमें आपको मॉडल्स बनाने होते हैं. हर किसी को सिचुएशन टेस्ट देने का मौका नहीं मिलता. जो CAT में क्लियर होते हैं और जो CAT में क्लियर होते हैं, उनको ही सिचुएशन टेस्ट देने का मौका मिलता है. सो येस, दिस इज हियर list of everything. So should I read? No, I'll just put a slide over here. I guess इतना आपको समझ आ गया होगा. So now this is the whole syllabus कि क्या क्या उस टेस्ट में कवर होगा. This is for BDES people only. So the exam will be of 120 minutes. आपको पूरे के पूरे 120 minutes दिए जाएंगे. आप हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से किसी में पेपर दे सकते हैं, तो कुछ लैंग्वेज बैरियर नहीं है. सेक्शंस होते हैं आपके पास, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके अलॉटेड होते हैं, जिसमें से आपको कम्युनिकेशन एबिलिटी के 25 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चंस होते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस होते हैं, एनालिटिकल एबिलिटी के 15 और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के 15. सो यानी कि आपके टोटल 100 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है गाइस. सो ढंग से पढ़ना लिखना थोड़ा, क्योंकि मैं तो निकल गई. So yes, that is the thing. And if I move on to what is CAT, अभी हम पहले BDES लोगों के बारे में ही बात करते हैं. BFTECH के लिए we will talk, you know, because I feel like BFTECH में सिर्फ GAT देना होता है. ज़्यादा दिमाग ख़राब BDES में ही होता है, because बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं. So yes, now moving on to the creative ability test, which is CAT. इसमें आप लोगों को candidates who try to disclose their identity by writing any personal details or place any identification mark in the answer sheet are disqualified. ये चीज़ प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, because इसमें आपको ड्राइंग करना रहता है, ठीक है. You will be given a drawing sheet, CAT में creative ability test. So there will be certain questions. For example, there will be a question like can you draw a 3D space? Can you draw a room for a kid, playroom?
can you create a room for a photographer? So these are the things which you need to be done. Maybe आपको किसी चीज़ में कलर भरने को दिया जाए कि मुझे एक फैब्रिक डिज़ाइन करना है फॉर फेस्टिव सीजन, सो मैं कौन कौन से कलर्स चूज़ करती हूँ. तो क्या इसमें है बेसिकली ये पॉइंट्स हैं कि आपको उसमें कुछ भी अलग से मार्क नहीं करके आना, अपना नाम नहीं लिखना, वरना आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे बिकॉज आइडेंटिटी रिवील नहीं करते वो लोग. एंड इसके हम नीचे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है सर्कुलर में. दिस टेस्ट इज एडमिनिस्ट्रर्ड फॉर बोथ यूजी एंड पीजी डिज़ाइन प्रोग्राम्स टू जज दी intuitive ability, power of observation, concept, development and designability of the candidate. An important aspect of the test is to creative and innovative use of colors and illustration skills, as I said. So yes, इसके syllabus के बारे में हम अब देखते हैं. So the craziest part is there are like 13 topics to cover, more than 13 I feel. I've listed here the most important 13 topics which you need to cover. So yes, let's get into it one by one. So the first one is drawing. First one is perspective drawing, which is very important. 1 point, 2 point and all that you need to learn. And how you will learn, either you learn from YouTube or you either join a coaching for that. YouTube is best I feel. Then comes mascot design. Mascot design is जो McD का वो बाहर नहीं होता, the clown sort of thing that is called as mascot. For example, for Amul we have the little girl. For other things as well, we have certain of the cartoon characters. For IPL we have one. So yes, that is it, and that is known as mascots. And elements and principles of drawing, this you can learn. Color grid, color theory. Color theory is very important. Color theory is like you need to learn. For example, these are not complementing, these are contrasting colors. For example, orange goes with blue, yellow goes with green or pink. So yeah, according to that एक color wheel आता है, आप उसके accordingly देख सकते हैं. Maybe I'll put a, if I don't get lazy enough to edit this video, I'll put a color wheel over here. And अगर मैंने color wheel नहीं डाला तो समझना मैं lazy हो गई थी and I didn't put it. And then comes product design. Product design is also very important because product design comes with a lot of principles. For example, if you're asked to design a chair, so you should design a balanced chair. Even if there's one single leg for the chair, but that needs to be in the center and there should be a concept note. Yes, what is a concept note? Concept note is very important. It is basically a paragraph or write-up for your design or for just a justification for whatever you have done. So if I'm putting one leg in the center of the stool, I need to assure that why is it at the center? Why is it not at the corner? The design should have practicality into it. ऐसा नहीं है सिर्फ दिखने में अच्छा लग रहा है या फिर कलर सुंदर डाल दिए हैं, that's why we have drawn it. So yes, that is it. Then comes the comic strip. Comic strip is very important. You need to learn how to draw cartoons, how to draw human figures, this is very important. Human figures again, topic number 13. Then comes sequential drawing. Sequential drawing is मैंने मैगी बनाई. What are the steps of making a Maggie, or what are the steps of making a ramen? This has come in one exam, that's why I'm telling. Sequential drawing is very important because you need to show the elements changing from one to another. They should not jump exactly from the first step to the fourth step, but you need to show the transformation. So you have to learn how to make the transformation work. Then comes storyboard. This is also very important. As I said, they'll ask you to draw all of these things. So you need to learn it properly. Write up, as I said, sequential drawing and human figures we discussed at. So yes, now moving on to the situation test. So as I said, situation test पे एक पूरी video dedicate करूँगी मैं आने वाले time पे. But this is like very very important. Situation test में आपको अपना सामान लेके जाना होता है, but थोड़ा कम ही सामान लेके जाना होता है. Like you're not allowed with a lot of things. They'll give you a proper kit and then आपको उसी से on spot कुछ बना के देना होता है. हर किसी बच्चे को एक ही सामान मिलता है. Colors का थोड़ा बहुत difference हो सकता है. Materials में difference नहीं होता usually. They'll give you aluminum foil, they'll give you transparent sheets, that OHP sheets. They also give you some papers, some textured papers, and then they'll ask you to design a bag for a dentist. They'll ask you to design a shoe for a kid. So आपको वो on spot बनाना होता है. So then आपको for example आपको pool बनाना था and then you don't have a blue sheet with you. So what you can do, you can put a transparent OHP sheet and then you give a reason कि I have shown the pool or the water through the transparent sheets, and why you have done that you have to show it वहाँ पे, because आपको ये नहीं बताना कि आपको इस blue paper नहीं था. You have to find a reason for it. So yes, that is all about situation test. Situation test is going to be
क्रेजी टास्क एंड बिकॉज उसमें जूरी आपको जज करती है. सो अगर आप सेटिस्फाई कर पाए जूरी को, सो दे विल टेक यू. और वरना सिचुएशन टेस्ट इज क्रेजी. ट्रस्ट मी, सिचुएशन टेस्ट कैन ईदर टेक यू अंदर निफ्ट के या फिर यू विल बी आउट. So yes, that is all about situation test. I'm not going into that much of depth because I have already posted a video of situation test, and if not, I'll definitely make one soon. So yes, हम एक बार ये पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है. Shortlisted candidates for BDES for the written entrance exams are required to take a situation test, which is a hands-on test to evaluate the candidate's skills for material handling, innovative ability on a given situation with a given set of materials. No additional materials will be provided or allowed. ओनली थोड़ा बहुत ऐसा पेंसिल वेंसिल अलाउड रहता है. सो येस, इसमें वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं आप लोगों की. आपका जो मटेरियल दिया है उसके साथ आपका हैंडलिंग कितना अच्छा है, कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स कितना अच्छा है, कलर स्कीम कितना अच्छा है, कंस्ट्रक्शन स्किल कितना अच्छा है, एंड फाइननेस ऑफ द मॉडल और प्रैक्टिकलिटी ऑफ द मॉडल कितना अच्छा है. सो दिस इज व्हाट दे एक्चुअली सी ऑन द क्राइटेरिया से जज यू. नाउ मूविंग ऑन टू द BFTECH गैट एग्जाम. एज आई सेड, हम आपके बारे में भी बात करेंगे बिकॉज आप लोगों के पास एक एग्जाम है देने के लिए. सो आई होप कि आप अच्छे से वो क्लियर करो बिकॉज गैट इज़ समवॉट, इट्स लाइक कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. अगर आपने पढ़ा तो आपको आ जाएगा, बट कैट और सिचुएशन टेस्ट में क्या होता है कि कभी कभार आप पढ़ के, आप कितना ही कलर थ्योरी पढ़ोगे, आप कितना ही 1.2 पॉइंट परस्पेक्टिव ड्राइंग पढ़ के जाओगे, अगर क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया और आपको मटेरियल्स ही नहीं दिए तो. दैट इज़ वाई आई से गैट इज़ much more better option, मतलब much more easier, or you can say scoring, than CAT and situation test. So yes, this is also for BFTECH people. You will have 150 questions. You will not have 100 questions. BTECH people will be having 100 questions, but for BFTECH you will have 150 questions. So the test duration will be 180 minutes. For them it was 120, right? Yes, for BTECH people it was 120. For BFTECH people is going to be 180 test durations, and communication ability and English comprehension will be of 45 questions you will be given. English में obviously आपको ज़्यादा questions हैं. Case study आपकी 25 questions होंगे उसके अंदर. Quantitative ability आपके 30 होंगे. Analytical and logical abilities आपके 25, and general ability and current affairs will be 25. सो ऑल दिस, ये कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या कवर करना है, ये भी मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ. सो डू वॉच दैट. आई पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन, एंड ऑल्सो फॉर द सिलेबस आई पुट माई प्रीवियस ईयर वीडियो एज वेल बिकॉज मैंने पूरा लिस्ट करके बताया है. एंड ऑल्सो दिस वीडियो के नीचे ऑल्सो आई पुट अ लिस्ट डाउन, एक बार देख लेना. सो थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि इंग्लिश में क्या करना है एंड जीके में क्या करना है. सो येस, मूविंग ऑन टू कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन. इसमें आपको सर्टन टॉपिक्स कवर करने हैं, जिसमें से टॉप 5 टॉपिक्स आपको बता देती हूँ. फर्स्ट वन इज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. फॉर एग्जाम्पल कोई सेंटेंस दिया जाएगा एंड आपको उसको वन वर्ड से रिमूव करना है. इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको पढ़ के जाने हैं, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है ताकि वहाँ आप कर पाओ. एंड करेक्ट द स्पेलिंग एज वेल विल बी अ पार्ट ऑफ इट. सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इज लाइक देयर फेवरेट. देखिए वो उसको ऐसे भर के देते हैं भाई. हमारे में तो, मेरे को तो सारे याद है जहाँ तक सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ही थे. एंड देन कम्स सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स. So yes, that is all about English. And now moving on to the general questions and current affairs, which is the current affairs, political से related थोड़ा बहुत, geography से related, sports and awards and honors. GK के ऊपर I have already told like पहले भी that you need to be thorough with the textile GK as well. Who's a textile minister? What is a textile? Belongs to which textile? Which state? You also need to know that what fabric is made where, which painting is made where, in which state. So yes, that is one thing which you need to know about GK and current affairs in total. Okay, so I feel like my presentation is over here, but I've also jotted down some of the points for what? For the people जिनको maths का thing था. As I said, quantitative aptitude will be one of the part. इसमें आपको number systems पढ़ने हैं, fractions पढ़ने हैं, percentage पढ़ना है, profit and loss, rate of interest, work and task, ratio and proportion, time, distance and speed के numericals, simplifications, averages, pipes and cisterns का जो questions होता है ना कि इतना का डाया का पाइप है, इतना पानी कितने में निकलेगा, and something like that, maths का if you remember. Then comes problem of ages,
mixtures and allocations, both and streams, permutations and combination is their favorite topic. I think they gave it. Problems of train, dude, मेरे में आया था, मेरे में तो boards में भी आया था, मुझे अच्छे से याद है. And then comes surface area and volume, one of my favorite chapters, easiest. And then verbal reasonings and non-verbal reasonings वाला एक different category है. इसके अंडर के topics हैं वो मैं बता देती हूँ. It is इसके 15 कुछ क्वेश्चंस आते हैं. वर्बल रीजनिंग, सीरीज कंप्लीशन, सीरीज आ जाएगी 4, 16, 18, 19. तो उसके बाद क्या आएगा? 18, 19 नहीं होगा यूजुअली, मैं ऐसे बोल रही हूँ. एनालॉजी Then comes coding and decoding, blood relations, my favorite topic, puzzle test, direction sense आया था मेरे में, मुझे याद आ रहा है. लॉजिकल वेन डायग्राम इनका फेवरेट टॉपिक होता है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है. अल्फाबेट टेस्ट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स. देन कम्स नॉन वर्बल एंड एनालिटिकल रीजनिंग्स में अर्थमेटिकल रीजनिंग्स, सीटिंग अरेंजमेंट्स, cause and effect, data sufficiency, statements and arguments, statements and assumptions, and statement and conclusion. So basically they'll give you a scenario and then they'll give you कि is this true or not, is this true or not, ऐसे करके 4 statements दूंगी, उसमें से आपको कुछ चूज करना होता है. सो ये पूरा का पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी बिकॉज मैं ऐसे बोल रही हूँ, आपको शायद इतना अच्छे से समझ ना आए, बट आई फील इफ आई पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन इट विल बी मच मोर ईजियर फॉर यू गाइज टू बाद में वीडियो पॉज करके देखने के लिए. So yes, that is it about today's video. Hope you enjoyed it, and if you have more doubts, do comment here only, or you can put it on my Instagram first, so you can put it on my Instagram as well. So yes, that is it for today's video, and do let me know what next video you want to see. Do you want me to open one sample paper and maybe talk about it for CAT and for situation test, or we can either make some videos regarding your question answer series and also for the counseling processes, like what are the top colleges, how do you want to get into the one of them, like how do you want to go to the top colleges, what is the proper methods or proper practices which is done. So yes, that is it about today's video. Hope you guys enjoyed it, and do not forget to like, share and subscribe my YouTube channel, so whenever I post new content you guys get notified first.